Breaking his silence, Prime Minister Manmohan Singh said it out loud that he is not going to opt for a third term and would like to hand over the baton to another Prime Minister from the UPA. Now, this comes amidst a growing clamour within the UPA for the party's leadership to name the prime ministerial nominee for 2014. Is Manmohan Singh paving the way for Rahul Gandhi to lead the Congress's charge for the general elections? I have indicated in my opening remarks that I am not going to be a candidate for the Prime Ministership if the UPA were to come back into power. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate, and I hope our party will take that decision at an appropriate time. इस देश के लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, कौन प्रधानमंत्री बनता है। इस देश की जनता मरी हुई है, पिसी हुई है। उनको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए। 220 रुपए का सिलेंडर बढ़ा दिया, बताओ एक गरीब आदमी कैसे अपना गुजारा करेगा। उन चीजों की तो बात ही नहीं होती। सारा दिन बस ये होता रहता है, ये प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। अरे कोई भी बन जाए प्रधानमंत्री, क्या फर्क पड़ता है। This is an important press conference that he did, certain messages he wanted to give to the country. We have had, I think, a unique privilege and honor to have served with such a remarkable man, a gentle soul, a remarkable man, and of course an economic genius. Through very, very difficult times and tough times, we still have the last lap to run. 3 more months, the last lap to run. The victory lap is still to be run. So he said the younger generation is to take over, is something very significant that he has said. How soon will we be seeing a generational shift as far as leadership of the Congress party is concerned? The leadership of the Congress is already there for you to see. We have the young leadership already. The triumvirate leadership has Mr. Rahul Gandhi. He's the vice president of our party. So I don't think you have to wait. He's there already. We have him and he's leading us from the front. आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें तो उनके जवाब जो है वो एक तरह से हमको कन्विंस तो नहीं करते। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, लोग महसूस नहीं करते। और जब लोग महसूस करते हैं और लोग जो है वो नियत पहचानते हैं, इसलिए जो हालत उनके कार्यकाल में हुई है, देश बहुत पीछे गया है। और जो राजनीति आज देश में हो रही है वो भी इस देश को आगे नहीं ले जाएगी, पीछे ले जाएगी। यानी देश में आर्थिक विषमता, यानी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी,